viable for everyone to see, and not to disrespect anyone's interest in this. He has, in our opinion, and soon and hopefully in your opinion also, lived up to everyone's expectations. And what you will see is a dance performance, what you will see is emotions, what you will see is faith come to life with this song and through Aura. So that's what. Thank you so much. Thank you. The Shiv Taandav. What you all have to say? Please step forward. Closer and forward. So overall, I'm loving the concept where we are blending like the Korean culture and the Indian culture as well. So coming from where we belong, we mainly promote like Korean culture across India, doing like events and basically like promoting Korean culture as well. And since the past few years, we have also been connected with Aura's work, how he is blending both the elements. So overall, yeah, we are very excited about the whole concept about Taandav, and we are excited to even see and vibe with the songs. Anybody else want to say anything? Thank you. Thank you. So much. Yes. It is something very new and unique, and I can't wait because what I've heard about his performance, that it's quite good. So I'm looking forward to it. Exactly. You have your series also. Yes, his series is coming, Yes. which is Talash. Talash on Netflix coming soon in a few months. So I'm eagerly waiting for that. Yeah, even we are eagerly waiting for that. And thoda sa about this song is that आजकल everyone is going crazy about this whole K-pop culture आ गया है इंडिया में, और इतने सारे लोग पागल है, इतने सारे फैंस हैं. अभी आपने देखे इतने सारे ग्रुप्स आए हैं यहाँ पर. बट इट इज़ सो नाइस टू सी Aura represent our culture there and put it on an international platform and promote Shiva in Korea. So ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा amazing point था and I loved it. और teaser तो आप देख लेंगे and गाना is also fantastic. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We just do a picture both. ये वो रेंसिल डिसिल्वा सर ने डायरेक्ट किया है, नेटफ्लिक्स पे आ रही है. और अंसाम्बल कास्ट है जिसमें परिणीति चोपड़ा है, जेनिफर विंगेट है, सोनी राजदान, अनूप सोनी, सुमित व्यास, हरलीन सेठी. तो काफ़ी अच्छी कास्ट है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है, और एक बहुत टाइम बाद एक थ्रिलर आ रही है नेटफ्लिक्स पे. सो it should be good. I think it will be a good watch for everybody. So first you were working with Shilpa Shetty, now Praniti Chopra. What is the difference? How does it feel? Well, बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसे मौके मिले हैं कि मैंने अपनी प्रीवियस फिल्म नेटफ्लिक्स पे शिल्पा शेट्टी के साथ की है, और इस बार परिणीति चोपड़ा के साथ कर रहा हूँ. तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और कास्ट भी बहुत अमेजिंग है, और सबके साथ काम करके इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा. एंड इट वाज अ नाइस स्टोरी, एंड रेंसिल डिसिल्वा सर इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर. बीन वांटिंग टू वर्क विद हिम, और फाइनली एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे. थैंक यू. Thank you. Come on. Or any country. So nowadays we Indians are very inspired with Korean music, Korean dance, Korean cinema. So when I heard this concept of the song from Parul, that Aura, Korean singer, is going to sing a song on Lord Shiva in Hindi, in Sanskrit and in English, that was a wow moment for me. That thing inspired me to be a part of this song as a producer. आपने जब गाना सुना, what was your reaction? I तो loved it. मुझे तो अच्छा लगा बहुत गाना. Just waiting कि कभी इसका exact video आ जाए. I'm just waiting for this. Thank you. Thank you. Just do pictures. All I can do is wish them all the best, yes. It's always nice to keep doing new ventures and new releases, and yes, wishing them all the best. Thank you. Thank you. लैंग्वेज इतनी ज़्यादा टफ होती है, एंड एक कोरियन बंदे ने और शिव तांडव को गाया है, सो इट्स रियली इनक्रेडिबल. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर दिस शिव तांडव. एंड ही इज़ मल्टी टैलेंटेड. आई थिंक ही इज़ वेरी नाइस. सो आई थिंक कोरिया के अंदर बहुत टैलेंट है, एंड आई एम ग्लैड कि हमारे इंडिया में वो टैलेंट आया. सो इट्स रियली गुड, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम, मूरा, एवरीवन. थैंक यू. सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल.
आज क्या है अर्धनारीश्वर जो होता है, भगवान ने हम लोग को बनाया। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना सारा लोगों में हम लोग को भी याद किया, जो होना चाहिए था सबके ध्यान में नहीं रहता है। जो सब्जेक्ट का गाना है आज उसमें हम लोग का ही है, तो आप सब ने याद किया, मुझे इनवाइट किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सबसे मुझे एक बात सबसे अच्छा लगा, हम लोग जो इंडिया की जो कल्चर बाहर देश का लोग अपना लिया। मैं चाहती हूँ जो हम लोग इंडियन हैं उनको भी अपनाना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं भारत की सारी किन्नर माँ की तरफ से। थैंक यू सभी। हर हर महादेव। हमारी इंडियन जो जिसको कहते हैं ना, जो योगिक नॉलेज है और जो हमारा इतना बड़ा इतिहास है, वो इंस्पायर कर रहा है सिंगर्स और परफॉर्मर्स को जो कोरिया से हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है और मुझे लगता है आने वाले पलों में, आने वाले जितने भी वर्ष अभी आने वाले हैं, उसमें इंडियन एथॉस और इंडियन कल्चर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि हर तरफ आज सितार वादक को लाखों लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। ऋषभ शर्मा जी हैं और ऐसे बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं जो सेंटर में आ रहे हैं। मेडिटेशन, योगा और हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऑरा ने ये शिव तांडव आप लोगों के लिए अपने स्टाइल में पेश करने की कोशिश की है और इस चीज़ की हमारे म्यूज़िकल लेगेसी को भी बड़ी खुशी है कि इन लोग हमारे इस कल्चर को, हमारे इस म्यूज़िक को अडैप्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ यही फ्यूचर है। और आज ह्यूमन वेलनेस जो होती है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इंडियन कल्चर का है, जो ह्यूमन लाइफ को चेंज करने के लिए हमारा जो इतनी बड़ी हमारी जो नॉलेज है आयुर्वेद की, मेडिसिन्स की, योगा की, हमारे कल्चर की, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाले पूरे विश्व पे। एंड संगीत इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आप जानते हैं सारे ब्रह्मांड के अंदर जो एक्चुअल साउंड है वो साउंड है ओम का। ये ऑलरेडी सारे साइंटिस्ट और सारी दुनिया ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे जो क्रिएशन है, पूरे ब्रह्मांड, हमारे पूरे यूनिवर्स का जो मेन साउंड है वो ओम है। सो टुडे इट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी एज एन इंडियन and also as a musician that international musicians like Aura are taking the step towards making Indian classical music a part of their musical journey. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Aura, Dabuji is here. Would you like to sing a line or say something? Sir, this what's Small sound. Sing. Tetap terbikallah dalam robah babi terseleh kalebalam balam bitam pujang gadong gamalika tamat nina tawatamar bayam cakara caratan dabang tanutuna shiva shivam. Har Har Mahadev. Well done. Because we'll go inside to the house. Yes. But could you tell me the journey about Shiva Shivam? How does this journey started and what made you to sing this Shiva Shivam? Look center, huh? And how it was difficult or easy to sing this song? First, Sanskrit, this very difficult, and I prepare time 1 year. So everyday meditation, also everyday learning. Now also today also learning, so many practice, but very happy. Could you tell me about your entire of today's song launch? You are looking very nice. Thank you. How did you plan? I'm so very grateful, and because sir coming also, I'm so very grateful. Thanks for God also. Also now just I want to this know. Now I'm learning India culture also, India music also. Now start. So until now today landed in India 3 years today. So after also look forward. Thank you so much. Tell me about your video which you are launching today. I'm so very excited and I'm so very happy because we are together. Thank you. Good luck to Aura. Good luck everybody. Thank you. And wish him all the luck so that. God bless you. Thank you. इसका टैलेंट अपरंपार है और शिव जी की ब्लेसिंग्स इसके साथ हैं. Nobody can stop this boy because his humility and his innocence is what is going to win him. Win his
entire destiny is going to be rewritten. It's going to make a big impact globally. Mark my words, this song has touched me and it's going to go a big global hit. God bless you. God bless you. Tremendous bass line, tremendous arrangement and programming. Brother? Bye. Bhai, son, beta, my son is as old as you, I'm sure. You're going to rock it, and this is it for you, okay? Are you ready to become the global star? Ready? Yeah? Okay. Thank you so much. So now it's available on all platforms, ingested already? Yes. All across? Yeah, it's going live now. As we speak, 4 o'clock is the time when it goes live. So yes, it's live now. I want to call you my son now, okay? All bless. Okay, thank you. No, one, I'll only take the blessing box. जितने बार मैंने इसको हाथ कर दिया कितने बार क्यों हाथ कर रहा भाई When I went to Bigg Boss house, I was not prepared. I just, it was a very impromptu decision by my family, not even by me, to just go to a platform like Bigg Boss. And I used to like shiver, at times when people are like fighting, because I am somebody in life who's very straightforward and I am not at all into manipulations or shouting. So my mom said कि कुछ भी हो, so just say Jai Guru Ji or just say Om Namah Shivaya. And I was so happy. I really feel it was a blessing from God, because I think after about staying for about 1 month, I was really feeling कि oh my God, ये घर पे सब या तो mental है, या फिर they don't know how to have a conversation, how to have a normal conversation. And there enters Aura. And I can't even tell you, जब वो आया घर के अंदर, मैं उसको देख के इतनी खुश थी, because I think घर पे उसको कोई जानता नहीं था इतना, but मुझे आता, because उस point of time पे I was working with Saregama very closely. And मैंने ये रचना को भी बात नहीं पता, but उस टाइम पे मैंने उसका गाना जिमी जिमी सुना था. I was like, oh, it's that Jimmy Jimmy boy. And then all of a sudden there was this Bigg Boss is like, Manara जानती है इसको. So I introduced him, and उसके बाद हम 4 घंटे वहाँ पे बातें करते थे, और लोग मुझे ताना मारते थे कि तू इससे बात क्या करती है. And I was like, मैं जो भी बात करती हूँ मुझे बहुत मजा आता है उससे बात करके. And the clip which you just saw, मुझे भी नहीं पता था, मुझे यहीं आज रचना ने बताया. तो हम वहाँ पे बाहर बैठे थे और मैंने पूरे बालों में तेल वेल लगाया था. And Aura enters, and we just like made like a little group, and we were like, let's do Aura Om chanting. तो थोड़ा सा मुझे याद है. And वो तो ये तो बहुत ही simple है. तो वो तो क्या था, oh yeah, let's do it. And that's how our friendship was like growing. And he is one of the few people जिसको मैं घर के बाहर आके भी, we are always in touch. Like Rachna and Aura, they are like family. Like वो मेरी मम्मा को मम्मा बोलता है, he's like कि मेरे को तेरे घर आने, whatever it is, we are there for each other. And I think the most beautiful thing about him, as Saurabh also said, is simplicity. I think if you're simple now, the world connects with you. You might take some time to reach where you want to reach in life, but the world connects with you and people follow your journey, and Aura's journey is something like that. I'm so happy, 3 साल, और वो इतना amazing काम कर रहा है, इतने amazing outfits पहन रहा है, और मुझे Shiva Shiva Part 2 in Korea, you take me, okay? We are going. Rachna, book the ticket, okay? And Namah Shivaya. I'm so very happy. Shiva Shiva. For coming here and supporting us. I'm going to ask Aura to now sing the song, and we'll officially release the audio of this. This is not just a song, it's a prayer. No singing song? I think everybody would like to actually watch it one more time, like maybe 2 more times, 3 more times, yeah.
And can we have very, very gorgeous, very beautiful. Welcome to India. I just heard that you have come here back again, and it's always welcome from our end. And I'm so sorry I got a little late, but I'm very excited because I've heard so many like beautiful things about this song from Abhay. Thank you so much for having me here, Abhay, and looking forward to see this beautiful song and groove on it for sure. Thank you so much.